Students, today the topic which I have selected for you, proceeding the previous topic, that is the refractive index. Let us have a small recapitulation before the refractive index, that is what is refraction. What is refraction? Refraction is nothing but the bending of light ray after changing the medium, either away from the normal or towards the normal. Deviation of the path of the light after changing the medium. See, suppose दिस इज द इंटरफेस ऑफ एनी टू मीडियम. यदि ये किसी दो मीडियम का इंटरफेस है, सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, एंड इफ इट इज द रेयर एंड दिस मीडियम इज डेंसर, इन दिस सिचुएशन इफ दिस इज द इंसिडेंट रे, देन इट इज सपोज टू गो इन द स्ट्रेट पाथ. इसी पाथ में ये आगे की ओर जाना चाहिए था इसको, बट इट डज नॉट हैपन लाइक दैट. इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द सेम पाथ, it deviates a little. ये हल्का डेविएट कर रहा है. ओके, इट चेंजेस इट्स पाथ, इट शिफ्ट्स इट्स पाथ. तो ऐसी सूरत में इसको कहेंगे दिस इज द डेविएशन ऑफ लाइट व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन आफ्टर गेटिंग द चेंज इन द मीडियम. दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. एंड हाउ मच विल इट बेंड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इट्स बेंडिंग, ये कितना बेंड करेगा, दिस विल बी गिवन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. You might have studied in class 10 if you remember Snell's law, under which you might have studied the ratio of sine I by sine R is always constant for a given medium. इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है of the medium 2 with respect to medium 1. So the comparison of the refractive index of any medium with respect to the another medium, this is called the relative refractive index. The relative refractive index. The velocity in the medium 1 and divided by velocity of light in medium 2, इसको कहते हैं relative refractive index. And if the first medium is, the previous medium is air and this is any other given medium, तो ऐसी सूरत में इसको कहते हैं the absolute refractive index. Absolute refractive इंडेक्स. इसको यदि एयर के साथ कंपेयर किया जाए तो इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यदि हम ग्लास की बात करें, देन इफ इट इज एयर और वैक्यूम एंड दिस इज योर ग्लास, तो ऐसी सूरत में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से refractive index of glass with respect to air is the sine I by sine Rg for the glass, or you can say the speed of light, the velocity of light in air, that is c, by the velocity of light in glass, that is Vg, will be, see, as we know that the velocity of light in the air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and the velocity of light in the glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. इन दोनों को खत्म कर दिया, then the value will be 1.5. This is the refractive index of glass with respect to air. Okay. If we talk about the diamond, यदि हम डायमंड की बात करें, then the refractive index of diamond with respect to air, यदि हम डायमंड की बात करें, एयर की बात करें, तो sin I by sin R diamond D for diamond equals to C by velocity in the diamond, which will be equal to 2.4. ये 2.4, this is the refractive index of the diamond. It means that
कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये ज्यादा बेंड करेगा. सी दिस विल बेंड मोर. सॉरी, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड इफ दिस इज द ग्लास then this will be the refracted ray of Rg, refracted ray of G. This is the this represent, and यहाँ पर if the object is, if the material is, if the second medium is diamond, then this will be, this angle will be RD, this angle will be RD. Okay, तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि कैसे ऐसा होता है. See, this is equation 1 and this is equation 2. In this situation the refractive index of the glass with respect to air by the refractive index of the diamond with respect to air will be given by sin I by sin G divided by sin I by sin R D, RG and RD. Okay, so this will give you, ये दोनों को वैनिश कर दो एंड ये वैल्यू कितना है आपका 2.4. सी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो दिस विल गिव यू द sin R D divided by sin R G and the value will be, this is the value, that means 1.5 and 2.4. okay, it means that ये इसको ऐसे काट दो, then it will give you 5/6. तो इसको इस तरह, now it implies that इससे हमको ये मिला कि sin R से sin R D divided by sin of R G is less than 1. ये एक से छोटा है. इसका मतलब ये है, it implies that sin RD is smaller than sin RG. ये कहता है, ये वाला इक्वेशन, ये फाइनल कंक्लूजन ये कहता है कि the angle of refraction in the diamond is less than the angle of refraction in the glass. यहां से हमको ये मिला कि angle of refraction in case of diamond is less than the angle of refraction in case of glass. इसका मतलब ये है ये वाला एंगल इस एंगल से छोटा रहेगा. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द वेलोसिटी, यदि हम वेलोसिटी के टर्म में बात करें देन हम ऐसे कर सकते हैं, से C divided by Vg and C divided by V diamond. यदि हम इसकी बात करें तो ये वैनिश हो गए V D divided by V G होगा. The velocity of light in the diamond by velocity of light in the glass, this is less than 1. यदि उस तरह से हम कंपेयर करेंगे तो this is less than 1. It implies that velocity of light in the diamond is less than the velocity of light in the glass. Okay, तो यहाँ से हमको ये एक बात मिला कि the velocity of light का velocity डायमंड में कम रहेगा और velocity of the light in glass will be more. Okay, तो जिसका velocity जिस सब्सटेंस में velocity of light ज्यादा रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा और जिसमें velocity of light कम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा. दिस इज द कंक्लूजन.